narrative in prose. It differs from short story as well as a novel in length, being a kind of middle distance, but more importantly in substance. So, guys, what is the novella? Novella is a midway or a middle kind of prose between a short story. That is, it is longer than short story, but shorter than a novel. So, novel और short story के बीच में क्या आता है? नोवेला आता है गाइस. इसको हम लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी. नोवेला इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी. It is one of the classical device from America, and many Americans they tend to start writing novel but end up writing novella. Okay, so it's called as long short story. So the general characteristics of the novella is, unlike the short story, it is a kind of epic quality. Unlike the novel, it is restricted to a single event, situation, or conflict, concentrates on single event and shows it as a kind of conflict. The event ought to have an unexpected turning point so that the conclusion surprises, even while it is a logical conclusion, and it may contain a concrete symbol, which is a steady point at the heart of the narrative. So basically, these are some of the important differences between the novella and the novel. Okay, so the classical example is The Old Man and the Sea and the Animal Farm. The Old Man and the Sea, guys, we know is written by the legendary American stylist, experimenter Ernest Hemingway. Okay, so this is a very important writer. Hemingway received a Nobel Prize for his creative prose style in the year 1954. Okay, and the novel Old Man and the Sea was published in the year 1952. Okay, the novel is a story of Santiago, okay, a Cuban fisherman and his struggle for survival. Okay, and we know that the novel went on to receive Pulitzer Prize in 1953, and eventually, because of this novel, mainly Hemingway went on to receive the Nobel Prize in 1954. So Hemingway is known for his unique prose style, which is called as minimalistic prose style. In the writings of Hemingway, we see a very distinct element of sparse prose. Sparse in Hindi we call as chhata hua, means very use of less words, brevity. Okay, so that was the typical feature of Hemingway. And just opposite to Hemingway was Faulkner, who was one of the greatest rivals of Hemingway of those days. Faulkner also received Nobel Prize for his unique stylistic contribution to English literature. Faulkner, in fact, used to write long poetic sentences, unlike Hemingway, who used to write very crisp and you can say minimal use of words. Okay, then we have got another example here as that of Animal Farm. Just now I told you in my earlier lecture that Animal Farm is actually a classic, you can say, science fiction political dystopia. It's called as political dystopia. It's a satire on, you can say, communism, Stalin's communism. So it's a political satire, dystopia. It is also a fable. Please remember all these words, fable. So guys, what is a fable? Fable is the when the animals are involved as characters. Jatak Kathaएं. Fables are when the animals are involved as the characters, and especially moral elements are involved. That is what you call a fable. Okay, very important. So ये आपको देखना है फेबल के बारे में. ठीक है, चलिए, तो ये सब लोग इसको नोट कर लेना. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी. तो शॉर्ट स्टोरी के बारे में देखें. तो व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी इज स्पेशली
Elusive. The title is elusive because it cannot be defined only in terms of length. There are long short stories longer than the average novella, and the very short ones, not more than a few paragraphs. The ancestors of the short story include myth, legend, parable, fairy stories, fables, anecdotes, exemplum, essay, and character studies. Now, guys, all of these words are very important. Like myth, any story that is oral, orally, told from generation to generation. So it's related to mythology, fantasy. Legend is about the story of a particular person about which the authenticity is unknown, but still the story has a certain cultural weightage. Like in Indian Hindu tradition, we say the legend of Ram, the legend of Hanuman. Okay, these are traditional, timeless stories that we have been told from generation to generation, and they contain a certain sense of morality, didactic element about them. So then parable. Parable is a religious story, especially a didactic religious moral tale. Say, for example, the stories of Jesus in Bible are parables. Fairy stories, we know, guys, are very popular and will fall under the light verse, or I would say the adventure stories of children. So fairy stories, we know, there are many stories means that come under fairy stories. Generally, the group itself will fall under fantasy novels. Okay, fantasy novel will cover all the stories related to fairies. It's a famous example. I've been just giving you the tale of Cinderella and the loss of her, I think, shoe. So you can just go for who has written Cinderella. Like then we can have Alice in Wonderland here, although it's not exactly a fairy story, but still very much a work of children, and of course a work meant for amusement more than anything else. So you can go for that. Then fables, I have just told you that animal a story in which animals are involved as characters. Fables were very popular in India, especially we can say the Panchtantra and Hitopdesh ki kahaniyan. All these are fables in Indian mythology also. So fables were popular genre in the age of Chaucer as well. We see there were many fables written, and you can compare fables to, I always say this is a very important point, please pay attention, to fablu, Fablau. The plural of fablu is fablux. Okay, you add x to it. So what is a fablu, guys? Fablu is a humorous story which is basically very rough as well. Rough humorous story, I can just in very short put it as a rough as well as humorous story. Okay, so that is what you can say a fableau is all about. In Chaucer's Canterbury Tale, we say the examples of fableau. There are very many examples like the tale of the fox and you know the tale of the fox and the crow. Okay, it's a very important tale. So that's an example of fableau. Okay, so any story which is rough, rough means belonging to lower section of the society. Humorous, So, okay, so that is there. Then anecdotes, anecdotes हिंदी में किससे हो गए? Real life stories को कहते हैं anecdotes. ठीक है? Real life stories. बहुत बार एग्जाम्स में आता है पॉइंट. Real life stories में basically that uh, which essays is known for its anecdotal style. So we know, of course, the great A.G. Gardner of the 20th century is known for its anecdotal style. There are many anecdotes that we see in the writings of many writers, like Mahatma Gandhi is known for quoting various anecdotes. Okay. Then we have got
Sarojini Naidu's anecdotes is a very famous anecdotes. Okay, exemplum is quite similar to parable only. Exemplum is exclusively moral tale, and it's a long prose sermon kind of thing. You can write it as long prose sermon. Sermon, Updesh, prose sermon, Sermon. Okay, sermons were very popular in 14th century again. We know that the tales of Canterbury Tales, there were two prose tales, because in Canterbury Tales, most of the stories are written in verse or in poetry, but there were two tales which were written in prose. Okay, so they were called as sermons. Okay, the essay, very important, and then character studies also. Now, guys, character studies were very popular in the ancient European culture. Okay, there was this writer called as classical writer called as Theophrastus. What was his name? Theophrastus. Okay, he was there, and he is known as one of the fathers of the ancient classical, you can say, literature of ancient classical, founder of character studies. ठीक है, अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर में आ जाएं, so we'll say that Hazlitt is known for his character sketches. Okay, William Hazlitt in Romantic Age is known for writing character sketches. There have been many writers, okay, who have given us some memorable character sketches, okay, including Hazlitt, Coleridge. In terms of essays, character studies were very famous. So early example includes biblical stories like Cain and Abel, the prodigal son, the good Samaritan, the so-called Bible stories. ये सब इसमें आ जाएंगी ना, parable और exemplum में. The whole of Book of Ruth has been viewed as some of the first short story. Book of Ruth. Ruth is a very famous character. रुथ जॉन कीट्स की पोएम में भी आया है, और एलटी में क्वेश्चन भी आया है कि कौन से राइटर की पोएम में रुथ एज अ कैरेक्टर दिखाई गई है, तो बिब्लिकल स्टोरी है. ठीक है, बिब्लिकल कैरेक्टर है, बाइबल का कैरेक्टर रुथ. अगर हम इंडियन उसमें देखें तो हम कहेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में शॉर्ट स्टोरीज में जो पहला लेजेंडरी वर्क है वो है कथा सरित सागर. नोट कर लेना. फर्स्ट वर्क इन इंडियन एस्थेटिसिज्म और इन इंडियन लिटरेचर is Katha Sarit Sagar. It's a collection of short stories, officially the first collection of short stories. It's a book written by Somdev. It's a famous 11th century collection of short stories. 11th century का collection है कथा सरित सागर. पक्का पूछा जा सकता है. ठीक है, सोमदेव भट्ट ने लिखा है ये, और जो कि कश्मीर के ऑथर हैं. कहाँ के हैं? कश्मीर. ही कम्स फ्रॉम कश्मीर. Others view the individual tales in Chaucer's Canterbury Tales and Boccaccio's Decameron as short stories, even though they are in poetic form. Detachable episodes in longer works often amount to short stories, like episodes in Don Quixote. Much of Dickens and the individual sections in Gulliver Travels might serve as example. देखो, ये सारे जो इसमें लिखे हुए हैं ना, सारी लाइंस में क्वेश्चन भरपूर बने हुए हैं आपके लिए. ठीक है, आपको देखना है कैसे क्वेश्चन आपको इससे एक्सट्रैक्ट करना है. जैसे डॉन क्वेते मैंने बताया था, डॉन क्वेते किसने लिखा है? कैरवांतिस ने लिखा है. पक्का क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, यूपीटीजीटी में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि कैरवांतिस कहाँ के हैं. स्पेनिश ऑथर है, अर्ली 17th सेंचुरी में, 1605 और 1615. इसका तो ईयर नोट कर लेना. दो वॉल्यूम्स में डॉन क्वेते आया है, 1605 और 1615 में. टू वॉल्यूम्स में आया डॉन क्वेते. और इसको क्या बोला गया है? फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवल. क्या बोला गया है? फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवल. ठीक है, डॉन क्वेते. इसका जो है सैंचो पांजा, इसका जो कैरेक्टर है
वो कौन है? सैंचो पांजा, ये नोट कर लेना। कई लोग सैंचो पांजा को रियल हीरो ऑफ डॉन क्विक्योटे कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल हीरो ऑफ डॉन क्विक्योटे, सैंचो पांजा। ठीक है, ये डॉन क्विक्योटे एक इसेंट्रिक नाइट है, और उसके साथ जो मिस एडवेंचर्स वो कर रहा है, उसमें उसका जो भागीदार है उसका नाम है सेंचो पांजा। ठीक है, जो कि उनके एक तरीके से एक मेंटर भी हैं सेंचो पांजा। और कई जगह कहा जाता है कि सेंचो पांजा इज द रियल हीरो ऑफ डॉन क्विक्योटे। सेंचो पांजा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गवर्निंग लीडिंग लाइट फॉर डॉन क्विक्योटे। सो अब इसमें ये याद रखना है कि जो डॉन क्विक्योटे है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसमें ह्यूमरस भी है ये। इसके अलावा मैंने बताया कि इसका जो प्लॉट है एपिसोडिक है। और इसमें कई जगह हम देखते हैं कि सबसे मेन क्या है कि डॉन क्विक्योटे में जो आपका स्टोरी है वो साइकोलॉजिकल जो उसके मोटिवेशन हमको दिखाती है। तो जो मॉडर्निज्म का मतलब ही मैंने लिटरेचर में क्या बताया है? साइकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये दोनों वर्ड्स अपने दिमाग में रख लो। एग्जाम में इसी से घूम घूम के पूछेगा। तो साइकोलॉजिकल भी है, और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल तो है ही। तो गाइज, डॉन क्विक्योटे हम देखते हैं कि पहला पिकारेस्क नॉवल भी है इंग्लिश लिटरेचर यूरोप में। पिकारेस्क एलिमेंट्स जो है यहीं से आए हैं, ये क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, और पिकारेस्क एलिमेंट्स पिकारो से बना है, जिसका मतलब होता है रग, अ नेव, KNAVE, रग, ROGUE, रग, अ नेव, अ पैटी क्रिमिनल। ओके, तो हम देखते हैं कि फिर इंग्लिश लिटरेचर में पहला पिकारेस कहाँ पर देखते हैं हम? जोसेफ एंड्रूज का, सॉरी, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज। ठीक है, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज 1742, विच वॉज द पैरोडी ऑफ पामेला। ठीक है, कब आया था ये? 1742 में आया था। जोसेफ एंड्रूज पहला इंग्लिश पिकारेस्क वर्क है जो कि सीधा सीधा किससे इन्फ्लुएंस था? मैंने बताया डॉन क्विक्योटे से था। ये किसने लिखा है? हेनरी फील्डिंग, जो कि फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स इन 18th century आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश नॉवेल्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि 1742 में लिखा हुआ नॉवल है, और ये पहला पिकारेस्क नॉवल कहा जाता है इंग्लैंड में। और इसमें जोसेफ एंड्रूज के प्रीफेस में हेनरी फील्डिंग ने एक टर्म लिखा, चाहो तो तुम लोग लिख लेना, कॉमिक एपिक इन प्रोज। क्या कहा उन्होंने नॉवल को? कॉमिक एपिक इन प्रोज। इसलिए कई बुक्स में हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। मेन वर्ड जो उनके बारे में है वो क्या है? रियलिज्म। हेनरी फील्डिंग इज नोन टू ब्रॉट और टू ब्रिंग रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, इन नॉवेल्स। बिकॉज इनसे पहले जो आए थे सैमुअल रिचर्डसन, he brought a new field of novels writing, a new style of novel form called as epistolary novel. ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ ग्रीन में, epistolary, epistolary, you all are familiar with this word. Epistolary is made from epistle, which means letter writing. So this inventive form was given to us by the great Samuel Richardson in the first English novel Pamela, which appeared in the year 1740. पामेला का सब टाइटल भी पूछा है, वर्च्यू रिवॉर्डेड, वर्च्यू रिवॉर्डेड। ठीक है, 1740 में पामेला, जो कि एक एपिस्टोलरी नॉवल है और मोरालिटी से भरा हुआ डायडेक्टिक नॉवल है। तो इसमें फिर इसमें इतनी मोरालिटी दिखाई गई कि वो मोरालिटी जो है हेनरी फील्डिंग को नहीं जची, और हेनरी फील्डिंग ने कहा कि आई विल गो विद representation of realism in novels. And later on we see that the major trend which caught up in the representation of English society was that of realism and not that of morality. Okay, that's why many critics consider Henry Fielding to be a considerable influence, more considerable influence than that of, you can say, than that of Samuel Richardson's. Okay, so कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, डॉन क्विक्योटे पे मैंने इतनी सारी चीजें बताई। फिर अगर आप यहाँ पर देखें डिकेंस के वर्क्स में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एपिसोडिक स्टोरीज भी हैं नॉवल के अंदर। डिकेंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्क आता है
जो कि एक जिसे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिकेंस के तौर पर पूछा जा सकता है। बता सकते हैं आप लोग कौन सा वर्क है जिसमें कि क्रिश्चियन, एक शॉर्ट स्टोरी है क्रिसमस कैरोल, नोट कर लेना। क्रिसमस कैरोल बहुत ही फेमस, हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में टेक्स्ट में भी लग रहा है क्रिसमस कैरोल। और ये एक इसमें जो है अंकल स्क्रूज, अंकल स्क्रूज बहुत ही एक खड़ूस और कंजूस टाइप का एक अंकल है, उसका एक मेमोरेबल कैरेक्टर क्रिएट किया था डिकेंस ने। तो ये शॉर्ट स्टोरीज में आ जाता है क्रिसमस कैरोल, शॉर्ट स्टोरी कम प्ले, टाइप ऑफ प्ले। ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस, मैंने बताया था कि चार्ल्स डिकेंस को क्या कहा जाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में आप लोग को याद रखना है। कैरिकेचरिस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैरिकेचरिस्ट, बिकॉज ऑफ हिज मेमोरेबल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशंस इज नोन एज कैरिकेचरिस्ट। ठीक है। और स्मॉलेट से इन्फ्लुएंस थे ये, स्मॉलेट के कैरेक्टर स्केचेस को उन्होंने काफी ज्यादा जो है उसको कॉपी किया था। तो डिकेंस इज नोन एज कैरिकेचरिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। फिर हम देखते हैं इंडिविजुअल सेक्शंस, गुलिवर ट्रेवल्स, ऑफ कोर्स द ग्रेट जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रेवल्स 4 पार्ट्स में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, चाइल्ड क्लासिक में आ जाता है, तो वो भी इसके एग्जांपल्स में शॉर्ट स्टोरीज में आ जाएगा। ठीक है। इट इज नॉट रियली अंटिल 19th century that short story as we understand it today, a work of prose fiction of indeterminate length, was developed and established. Early pioneers included Walter Scott, Washington Irving, Hoffman and Hawthorne. Set the stage for Poe. नोट कर लेना, देखो पो आ गया यहाँ पर, एडगर एलन पो, who is known as the originator of the modern short story. प्लीज नोट करेगी पूरी क्लास। द father of short stories is Edgar Allan Poe. Now, Edgar Allan Poe is actually an American author. He is an American Gothic transcendentalist. जैसे लिखा हूं मैं से नोट करना, American Gothic transcendentalist. Okay, transcendentalist of 19th century. 19th सेंचुरी के गोथिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर हैं एडगर एलन पो। ये सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज के अलावा फादर ऑफ डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज भी माने जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है, एस्थेटिसिज्म इन अमेरिका, फाउंडर ऑफ, जैसे लिखा रहा हूँ वैसे नोट करना, फाउंडर ऑफ अमेरिकन सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म के फादर भी माने जाते हैं। एक्चुअली एडगर एलन पो इज एक्चुअली अ पोएट आल्सो। और इनकी एक पोएम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासिकली अमेरिका के सिलेबस में लगती है, यह अमेरिकन लिटरेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, द रेवन, RAVEN, द रेवन, रेवन एक्चुअली क्रो को कहते हैं। ठीक है। और एडगर एलन पो की पोएम जो है अमेरिकन सिंबोलिज्म का एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टो मानी जाती है, घोषणा पत्र माना जाता है। इसके अलावा एडगर एलन पो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी 2 शॉर्ट स्टोरीज पूरी क्लास आज ही देख लेगी। द पोरलाइन लेटर, पोरलाइन का मतलब होता है लॉस्ट लेटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। और एक इनकी जो सबसे डरावनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट गोथिक, मोस्ट हॉरिबल स्टोरी, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। ये 2 स्टोरीज स्पेशली दिखा रहा हूँ गाइस, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। ठीक है, ये दोनों स्टोरीज आपको याद रखनी है और इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है। फिर एक है इनकी द गोल्डन स्पाइडर करके, द गोल्ड बग, ये भी नोट कर लेना है, 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं, द गोल्ड बग, BUG। तो ये जो है इनकी शॉर्ट स्टोरीज में ये कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख रहे हैं पो एक्सेल्ड इन डिटेक्टिव, यहाँ नीचे अगर आप आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है पो एक्सेल्ड इन द डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज, द गोथिक स्पाइन चिलर। स्पाइन चिलर मीन्स क्या होता है, जो हमारी स्पाइन मीन्स हमारी कमर, पीठ का हिस्सा, उसको चिल कर दे, मतलब कि हमें बहुत अंदर तक डरा दे, एंड अ काइंड ऑफ अर्ली साइंस फिक्शन टेल्स ऑल्सो। ठीक है। तो एडगर एलन पो की फेमस शॉर्ट स्टोरीज आप गूगल कर लेना और उनके टाइटल जरूर लिख लेना, LT लेक्चर वालों को बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, TGT PGT में इनकी शॉर्ट स्टोरी से पूछेगा। और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो अब ये किन से इन्फ्लुएंस थे, जर्मन रोमांटिसिस्ट एंड देयर गोथिक स्टोरीज, बट ही बिकेम द अर्ली एंड मेजर इन्फ्लुएंस इन द 19th century टुवर्ड्स
the end of the 19th century, a group of American writers made a considerable name for themselves. In fact, many critics consider the short story to be a peculiarly American genre. मैंने बताया अभी कि Americans की शैली ज़्यादा है short stories में लिखना. In 1842, in a review of Nathaniel Hawthorne's Twice Told Tale, Edgar Allan Poe presented some ideas about the short story. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा गाइस. पूरी क्लास यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में इसको हाईलाइट कर देगी कि शॉर्ट स्टोरीज की जो एक्चुअली डेफिनेशन आई, जिसको कि मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स कैनन में कंसीडर करते हैं, वो कहाँ से आई. जब एडगर एलन पो ने हॉथॉर्न हॉथॉर्न भी लेजेंडरी राइटर है, जिनने क्या लिखा था. हॉथॉर्न ने लिखा है द स्कारलेट लेटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेला माना गया है और हर जगह इंडिया में मेजर यूनिवर्सिटीज के कोर्स में लग रहा है. द स्कारलेट लेटर के राइटर हैं, और हॉथॉर्न को मैं क्या कहता हूँ, रेबेल ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. ट्रांसेंडेंटलिज्म ग्रुप का बागी राइटर है. बागी आप समझ रहे हैं, जो अपने ग्रुप की प्रिंसिपल आइडियोलॉजी से रेबेल कर दे. ठीक है. सो हॉथॉर्न इज नोन एज, यू कैन रिमेम्बर हिम एज दैट काइंड ऑफ राइटर. सो उनका एक वर्क था ट्वाइस टोल्ड टेल. उसका रिव्यू करते हुए 1842 में एडगर एलन पो ने शॉर्ट स्टोरीज के फेमस आइडियोलॉजीज या उसकी जो कुछ प्रिंसिपल्स है उनको रखा था. जैसे इट्स अ प्रोज नैरेटिव रिक्वायरिंग एनीथिंग फ्रॉम हाफ एन आवर to 1 or 2 hours in its perusal. Perusal means in its study, means any work which require anything from half hour to 1 or 2 hours for at one stretch of study, and that can be completed at one stretch of reading, is called a short story. A story concentrates on a unique or single effect, and the story in which the totality of effect, जिसमें ऐसा कोई भी वर्क जिसमें जो इफेक्ट है उसका एक संपूर्णता, प्रभाव की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ इफेक्ट जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ये इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. देयर हैव बीन रिविजन्स टू दिस डेफिनेशन, बट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी स्टिल एग्री ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक, दैट इट इज यूजुअली शॉर्ट, a good deal less than 10,000 words. नोट कर लेंगे इसको, 10,000 words, and seldom more than 35,000 or so. in other words, economy. तो यानी कि हम इसको नोट कर सकते हैं कि मैंने शॉर्ट में 10,000 10K लिख दिया है. 10K to 35K words, ये इसकी एक वर्ड लिमिट होती है जनरली. It is nevertheless a story rather than a part of a story, a complete work with a discoverable unity comparable to that found in other forms, that is unity. तो यानी कि शॉर्ट स्टोरी की अपना एक यूनिटी ऑफ प्लॉट होगा और उसमें मेन क्या होगा, इकोनॉमी. तो यूनिटी और इकोनॉमी शॉर्ट स्टोरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इसके फीचर्स होंगे. सो आई थिंक दिस इज इट टुडे guys. For I hope you liked all the elements of short story and the major examples that I gave. It's also a good time to tell all of you happy Holi. And we are from Uttarakhand, where Holi is celebrated as a major festival. And we know, guys, that Holi unites all of us, especially in Kumaon and Garhwal. Holi is celebrated as a color of joy, as a color of spring, um, as it is a very beautiful festival. So KJ team wishes all of you very happy Holi, and play safe, play well, play with herbal colors. Most importantly, guys, that we have also announced our admissions for NET June 2023 batch. So those who are interested, please do give us a chance to share our knowledge with you all in terms of our NET expertise, because you know that by the grace of Almighty, I have qualified this exam multiple times. So you will get a lot of help. And also, most importantly, our Abhyasi series, that is this series of LT lecturer batch, is free. Along with that net batch, in that net course, you will get this course as well as extra classes that you require for your net preparation for paper 2. Okay, so happy Holi again to all of you, and I will see you soon. I will keep you updated about my uh, next lectures in terms of the topics and in terms of the dates, because Holi is here.
So we will celebrate our Holi, Kumaoni Holi, Khadi Holi, Baithaki Holi, especially very famous one in Kumaon. So please do involve in that, and it's a very important cultural heritage of our hills. So do preserve that and try to be a part of that beautiful celebration. I will catch you soon in my next lecture. Okay, till that time, stay happy, stay blessed. Thank you.